Hi, this is Subhayan Chakraborty for RevSportz, and I am with the father of a world champion right now, the father of Titas Sadhu, Ranadeep Sadhu. We are at Chinsurah, Hooghly, where he coaches, he trains the kids at his academy along with Priyankar. So we'll get to know the entire story from where Titas came, from how she became a world champion. Ranadeep, first of all, thank you so much. Your raw emotions, your first emotions after seeing your daughter win the World Cup, lift the World Cup for India. See, as a parent, you get your emotions from your daughters, your sons. Their pleasures is your pleasure. And it paid off her huge hard work in this ground. She ran and ran and ran, and she worked hard. She went to the gyms. There are many training partners. She actually train with. So thanks to everybody who actually contributed to her coaches. Main thanks to Shankar Pal. He actually identified her in the net. We sent her as a net bowler to the senior Bengal camp, and he just picked up from there and selected her in the senior team. And Ronaldip, she started as a sprinter, then went into swimming, table tennis, and now cricketer. I mean, cricket came out of nowhere. It was मतलब हम हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, ये अचानक से आ गया. And now she is a world champion. मतलब कैसे आप उस जर्नी को देखते हैं? Along with like starting, she was a swimmer. She started swimming, sprinting, table tennis, and from where cricket started. That should be for everybody. That should be that's how a player gets built. And it is India. It is it's very difficult because the system is different, society is different. Right. Here people start specialization in very early stage of life. But if you go abroad, there are people all the children, they play all the sports. They play for fun. Right. And then after the age, like studies, up to 10 you study all the subjects. Then from 11 you actually specialize in science, arts, commerce. Right. That is the right age for specialization. Then a coach, a mentor can understand, and the player himself, and the trainee himself can understand in which sport he is actually good at. If you look at De Villiers, if you look at any other players, they actually play. Ellis Perry for women. Yeah. And Sophie Divine for New Zealand played hockey. Even current under 19 current under 19 Australian opener. Oh right. Some ginger. She plays soccer also. Yeah. So in Australia, in other states, they are still at many sports. Here in India, in the subcontinent, it is difficult. That's mainly due to parents, and then mainly it is mainly due to our sports setup. But Chinsurah had a different kind of a history. Our parents, our fathers, uncles, they used to play 3 games together. Right. They used to play football in football season, cricket in cricket season, hockey actually got vanished due to in this setup. So it is now is more as like cricket. But to be a cricket player, you have to be a player first. Then you have to learn cricket. Right. Cricket is not a skill game no more. Right. It is. If you look at Indian male team, they are strongly built. They can hit any damn dead slow ball out of the stadium. Yeah. So that means power. That means something else. That means you have to have strong your posterior chain. Otherwise, you cannot do that. Right, and your message to all the parents who will be watching this interview, watching Titas come back as a champion, what will be your message to all the parents, not only female parents but male parents as well? What will you tell them? To all the parents, I will tell you that let the child dream something and follow that dream. Right. And if somebody wants to be a player, then he has to learn how to do hard work. And first, to be a player, you have to love your practice. Match is always good. Match gives lots of tension, energy, enthusiasm.
But practice is very lonely. Yeah. Nobody comes, nobody comes to see what happens to you in practice. Practice is lonely. Practice is very difficult. You have to, lose your sweat there. That's a That's a very valuable message to all the parents who are watching this interview. Practice domestic matches where you see empty ground, no one is watching. Yep. That is where you become a top cricketer. Thank you so much, Ranadeep for speaking to us, and we'll be here again when Titash comes back. We'll celebrate her. We'll celebrate this journey because after Jhulan Goswami, someone is emerging as a top class bowler from Bengal, and we'll celebrate each and everyone from that under 19 World Cup winning camp. हम लोग तिताश साधु के कोच प्रियंकर मुखर्जी के साथ है. प्रियंकर दा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रॉ इमोशंस, फर्स्ट इमोशंस बताइए जब आपने देखा कि तिताश का वो पहले स्पेल फिर इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल जीतना. ये तो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता. एक्सप्रेस ऑब्वियसली मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता ना. इमोशनली मूवमेंट्स है. वेरी हैप्पी. वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स. बट वो जो पूरा जर्नी था उसके बारे में आप बताइए. कहाँ आपने पहली बार तिताश को स्पॉट किया और मैं ही देखा था. मैं इधर खेलने आया था. उसके बाद मुलाकात हुआ तो रिंकू ने बोला जो थोड़ा देख लो हम लोग को प्लेयर को. तिताश का भी थोड़ा हमें बहुत छोटी थी. उसके बाद से धीरे धीरे, लेकिन उसका वो बहुत इंटेलिजेंट है. मैं राइट कभी भी कोई भी पूछता है ना, डिफरेंस बोलता है ना. तो आप 10 आदमी को कोचिंग देते हो. 10 आदमी आप मतलब 10 आदमी को पढ़ाते हो फिर कोचिंग कराते हो. 10 आदमी फर्स्ट सेकंड नहीं होगा. वो 2 ही होगा. लेकिन वो 2 होने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए वो उसमें था. और वो इंटेलिजेंस ही शायद हेल्प किया. मैं अगर कोई गलती बताऊं, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये तुमको रिकवर करना है. राइट. ये एक आदमी 7 दिन में करता है, वो 2.5 दिन में 3 दिन में. उसका प्रोसेसिंग अच्छा है रिकवरी का. वो सोचता है जो हाँ सर ये बोला है और ये मुझे करना है, इससे फायदा है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. एकदम अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. ओबीडियंट एंड नेचुरल एथलीट भी है. मतलब जिस हिसाब से उन्होंने स्प्रिंटिंग किया था बिल्कुल अर्ली एट द स्टेज, फिर स्विमिंग, फिर टेबल टेनिस, उसके बाद क्रिकेट. एकदम. सो छोटे से वो फीट ही है. जिम्नास्टिक करके जो जिम्नास्टिक स्विमिंग करेगा, दौड़ेगा, उसका बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा. राइट. रिंकूदा भी बहुत ट्रेनिंग करा था. रिंकूदा खुद भी करता था. कुछ खास चीज, कुछ खास क्वालिटीज जो आपने तिताश के अंदर ट्रेनिंग के टाइम पे देखी थी. रिंकूदा बता रहे थे कि अकेला जब कोविड के टाइम पे कोई नहीं था ग्राउंड में, शी वाज द ओनली वन जो आती थी ग्राउंड में घंटे तक प्रैक्टिस करती थी. बट कुछ खास क्वालिटी जो आपको देख के लगा कि नहीं ये लड़की बड़ा खेलेगी. वो तो बोल रहा हूँ जो देखो, एक कोच बोलता है ना, ये मेरा स्टूडेंट है, जो मेरी बात है, प्लेयर पैदा होता है, कोच सिर्फ गाइड कर सकते हैं. आप एक 37 जो मार्क्स लाता है, आप उसको 95 नहीं करवा पाओगे. जो 75 है आप उसको 92 करवा पाओगे. प्लेयर जन्म लेता है. ठीक है. हम सिर्फ अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं कि ये रास्ता तुम्हारे लिए सही है, ये करो, इसमें तुम्हारा 70 से तुम्हारा 90% तक कंसिस्टेंसी जाएगा. ये कंसिस्टेंसी होगा. और कोई चैलेंजेस आपने फेस किए तिताश को ट्रेन करते हुए? कुछ तकलीफ उसको उसके गेम में हो रही हो या आपको उसको कोचिंग देते वक्त हो रही हो? नहीं, मेरा उसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है. मैं मैच के बाहर से भी तिताश मतलब वो समझ जाता है कि सर नहीं यहाँ क्या. अब जब तिताश अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग एक प्लेयर बन चुकी है, प्लेयर ऑफ द मैच बन चुकी है फाइनल में, ये तो हिस्ट्री में जाएगा. बट आगे के लिए आप तिताश को क्या मैसेज दोगे कि ये तो जस्ट स्टार्टिंग है. इसके बाद सीनियर सभी कोच सोचेगा जो उसका स्टेडियम इंडिया खेले. और सिर्फ इंडिया खेलना नहीं, उधर कंटिन्यू मेंटेन करना. जैसे झूलन ने मेंटेन किया, इतना साल फिट जो है कि कंटिन्यू मेंटेन किया, झूलन निकालेगा. मैं वही चाहूंगा जो बहुत प्लेयर आएगा जो गया 3-4 मैच खेला, ये ऐसा नहीं जाएगा तो रुकना है, पूरा खेलना है और इंडिया को सर्व करना है अपना परफॉर्मेंस. उसके लिए जो प्रैक्टिस जो करना है वो तो हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे. Thank you so much, Priyankar Mukherjee, and it was a pleasure. Thank you. And keep watching RevSportz for more such stories. We'll bring you such stories from the under 19 World Cup winning team. This is Subhayan Chakraborty from Chinsurah, Hooghly.